हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बाय एपीएस। आज के इस वीडियो में आप सबका, हमारे व्यूअर्स का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 1 हम पहले रिलीज़ कर चुके हैं। आप हमारे पार्ट 1 को आराम से पहले देखिए, उसके बाद पार्ट 2 को देखिए। तो आज के वीडियो में हम कुछ टॉपिक कवर करने वाले हैं जो लेफ्ट आउट टॉपिक्स हैं पार्ट 1 के। तो चलिए देखते हैं कि आज के टॉपिक में कंटेंट क्या है। लास्ट प्रोजेक्टाइल पार्ट 1 में हमने कवर किया था प्रोजेक्टाइल के बारे में, जैसे प्रोजेक्टाइल क्या होता है। प्रोजेक्टाइल को स्टडी करने के लिए हमें वेक्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की समझ चाहिए, वो समझाया था। साथ में हमने वेलोसिटी और इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल के डेरिवेशन किए थे। साथ में हमने एप्लीकेशन किया था जहाँ पर हमने देखा कि रोनाल्डो फुटबॉल को किक करेंगे या नहीं। और अब हम आज टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज एंड मैक्सिमम हाइट को पार्ट 2 में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 वीडियो में डिस्कस किया था कि प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक होता है, जिसमें एक टॉप मोस्ट पॉइंट होता है। इस पाथ का इक्वेशन क्वाड्रेटिक होता है, जिसका डिग्री 2 होता है। प्रोजेक्टाइल को जब लॉन्च पॉइंट से लॉन्च करते हैं तो लॉन्च पॉइंट से टॉप मोस्ट पॉइंट तक की जर्नी को हम जर्नी ऑफ असेंट कहते हैं, और टॉप मोस्ट पॉइंट से ग्राउंड तक के रिमेनिंग जर्नी को डिसेंट कहते हैं। इस तरीके से हम टोटल जर्नी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जर्नी ऑफ असेंट एंड जर्नी ऑफ डिसेंट। इस जर्नी ऑफ असेंट और जर्नी ऑफ डिसेंट में लगने वाला टाइम इक्वल होता है, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि टाइम ऑफ असेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टाइम ऑफ डिसेंट। तो अगर आप टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट को ऐड करें तो टोटल टाइम, जिस टाइम के लिए प्रोजेक्टाइल एयर बॉर्न रहता है, एयर में रहता है, फ्लाइट में रहता है, आप उस टाइम को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए अगला टॉपिक है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का डेफिनेशन है अ टाइम इंटरवल फॉर विच अ प्रोजेक्टाइल रिमेन्स एयरबॉर्न और इन फ्लाइट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब जो टाइम ऑफ असेंट और डिसेंट, अगर हम उसको ऐड करें, जिस देर के लिए, जितने टाइम के लिए प्रोजेक्टाइल एयर में था, हम उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। इसीलिए हम टाइम ऑफ फ्लाइट को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। ओके, लेट्स ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। फॉर दैट वी हैव टू कंसीडर one xy plane. Let me draw y axis perpendicular to x axis. And label this axis as y-axis, and assume that a projectile is launched from the origin of the coordinate system that we have assumed, and the path taken by the projectile is parabolic, and the tangent drawn at the point of launch to the path is initial velocity u at angle theta, and O is the origin. And now let's resolve the vector, initial velocity vector u, into its component. So ux is acting along x-axis, that is nothing but equal to u cos theta, and the another component is uy acting along y-axis, that is u sin theta. Now consider that acceleration is only along the y-axis as the earth is pulling the object while it is in air. So the acceleration ay is written as minus g. Let me tell you that we have already discussed about it in part 1, that all the quantities which are directed upward along y-axis are taken to be positive here, and ay is downward, that is why it is negative. So at t equals to 0, the y coordinate of the projectile is 0 because it is at O. And after time t equals to capital T, that is the after time of flight, when the flight has been completed by the projectile, y is again 0. So from these 2 points, we can write for the vertical motion that in vertical direction, we are analyzing the motion along vertical direction. So by using or applying the second equation of motion, that is del y equals to ui t plus half et square,
del y equals to uy t plus half ay t square, and substituting delta y as 0 minus 0, and for which here we can say that uy is u sine theta and capital T is the time, half ay, in place of ay I can write minus g t square. So u sine theta t, it should be minus half gt square. So we can rewrite this equation as half gt square equals to u sine theta t. So t equals to u sine theta by 2u sine theta by g. This is our final expression for time of flight, and it gives you the time for which the particle or the projectile is airborne. This much is the time for which the projectile is in air. Okay, so if somebody says that what is the time of ascent and descent in case of projectile, so as we have discussed that time of ascent and descent are equal and their sum is time of flight. So remember that ascent time or descent time is always the time of flight's half, so you can say it is t by 2. So we can write that time of ascent or descent is u sine theta by g. Okay, now let's move to the next derivation, that is the quantity we say range. Let me use some advantage of technology. Let me copy the diagram again. Okay, we have to draw the diagram, this diagram, in almost all derivations related to all quantities of projectile motion. So let me paste it over here. Okay, so range, if we talk about range, the range is the distance covered on ground by a projectile from its point of launch to point where it lands. So in the diagram, as you can see, this distance from O to that marked distance where the projectile has landed on ground is the range. So this blue arrow, blue line, the range is the distance taken from O, that is the x0, and the particle where landed on the ground is the range point. Okay, so we can write x equals to r. So at time t equals to 0, we can say that particle is at origin, x equals to 0. And after t equals to time of flight, after the projectile has taken the journey, the particle landed at x equals to r. So in horizontal direction, if I'm applying the second equation of motion again, okay, using second equation of motion, and remember that along horizontal direction the acceleration ax is 0, because we have already earlier studied that in horizontal direction the motion is uniform, and in vertical direction the motion is uniformly accelerated. So ax is 0. So we can write the equation, second equation, as del x equals to uxt plus half ax t square. So del x is r minus 0 equals to u cos theta capital T, and ax is 0, so the second term will be, the whole term will go away. We will not use that term, it will going to vanish. So r equals to u cos theta, in place of time of flight, as we have derived the earlier expression, we can put it over here to u sine theta by g. So on simplifying it, I can write r equals to u, and u will be u square. Okay, so u square 2 sine theta cos theta by g. And let me tell you, there is an identity. Okay, there is an expression 2 sine theta cos theta is nothing but sine 2 theta. So I can write u square sine 2 theta by g. So this is our expression to calculate the range. Okay, the distance after which the projectile lands from the point of launch on the ground. Okay, so अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वांटिटी के डेरिवेशन की तरफ, दैट इज
maximum height, and let me again paste the diagram. But it is my suggestion, okay, that everyone should draw this diagram again and again every time when you are doing the derivation, so that you can have the clear idea that how the components are resolved, what are the minute details in the diagram. So let me draw this distance from the ground to the topmost point. Okay, this distance, this height the projectile attains during the journey is called maximum height. So the maximum height is nothing but a maximum distance attained from ground by a projectile during its flight, as you can see the definition. So we have to find out the expression for this topmost point, the height of the topmost point from the ground, that is h. So it is the vertical direction, okay? The body is rising from O to h. So at t equals to 0, we can write the y coordinate that the projectile was at origin, so y is 0. And at t equals to t by 2, that is the half time of the total time of flight, the particle reaches the topmost point, so y equals to h. This is the time of ascent. So in vertical direction, if we analyze the motion, तो हम equation of motion, second equation of motion फिर से apply करेंगे, because we are interested to find that how much vertical distance the projectile has attained while going from origin to the topmost point. So del y equals to uyt plus half ayt square. So in place of del y we can write h minus 0 equals to, in place of uy we can write u sin theta, y component, t, that is the t by 2 time, and plus half, in place of ay I can write minus g, and t by 2 whole square. So h equals to u sin theta. Now in place of time of flight I can write 2u sin theta by g. So 2u sin theta by g divided by 2 will be u sin theta by g. So in place of t by 2 I am using u sin theta by g, minus half g. U sin theta by g whole square would be u square sin square theta by g square. Okay, so on simplifying it I can write u square sin square theta by g minus half, okay, u square sin square theta by 2g. So if we subtract that, okay, it would be u square sin square theta by 2g. So it would be this is the final expression of how much height a projectile attains when it is launched, okay, during its journey. So let us reality check, okay. We apply these formula that we have derived, that whether they are applicable or predict the future of a projectile when it is launched or not. So let's consider a projectile is being launched at 60-degree angle from the ground, okay, with velocity, as I'm trying to label it over here, this direction, this is the tangent at origin to the path, parabolic path, gives you the initial velocity. Consider that the particle has been launched at initial speed 15 meter per second at angle 60 degree, okay, and we will see that how much time of flight or how much range and how much vertical height, that is the maximum height, it would going to cover. So we will find range, we would going to guess vertical height h and the time of flight of the whole journey, okay, and then we will see in reality whenever the particle is launched with 15 meter per second speed at 60-degree angle, whether our answers which we are going to calculate, they would give you the real picture, the real values which we will get when we do such thing in experiments, okay, when we launch a body, when we throw a body, whether that body will obey these equations, these formula or not. So let's start with the range, okay. So range has expression that we have derived just now, that is u square sin 2 theta by g.
let me put values over here. In place of u, I can write 15 square sine 2 into 60 degree divided by g, that is 9.8. This 15 square is nothing but 225. And sine 2 into 60 is sine 120 degree, okay? And 120 degree is equal to the sine 60 degree. So I can write root 3 by 2. Divided by 9.8. So if we just multiply 225 by root 3 has values 1.732. Okay, you must remember the values of roots, okay? Like from root 2 to root 10, you must know those values for easy calculation while doing the numericals, okay? So it would be 389.7 divided by 9.8 into 2. And if you further simplify it, we can write 389.7 divided by 19.6. If we divide them, we will get the range equals to 19.88 meter. So this would be the range, okay, for the projectile launched at 15 meters per second speed and at 60 degree angle. Now let's calculate maximum height for this projectile. So use this formula, u square sine square theta by 2g. Now we again substitute the same values. 15 square sine square 60 degree divided by 2 into 60 degree divided by 2 into 9.8. So 15 square is 225 and sine square 60 degree means it is root 3 by 2 whole square, so it would be 3 by 4 divided by 19.6. So when you multiply 225 by 3, you will get 675 times divided by 19.6 into 4. And if we simplify it, we will get the value of h as 8.61 meter. So this is the maximum height, okay? Now let's calculate time of flight. So time of flight is 2u sine theta by g. 2 into 15. Sine theta is sine 60 divided by 9.8. So it would be 30. Sine 60 is root 3 by 2. 9.8 into 2. So if we simplify it, we can get this value that time of flight is, if you multiply 30 by root 3, that is 1.73. Root 3 has value 1.732. So we can get 51.96 divided by 19.6, and the time of flight would be approx 2.65 seconds. So range is 19.88, maximum height is 8.61, and time of flight is 2.65. Okay, so keep these values in mind. We have to check these values using simulation. तो रियलिटी चेक के लिए जो हमने प्रॉब्लम लिया था, वहाँ पर हमने 15 मीटर पर सेकंड स्पीड से प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया, तो हमने सेम स्पीड यहाँ सिमुलेशन में 15 मीटर पर सेकंड लिया, और 60 डिग्री एंगल पर लॉन्च किया तो हमने सेम एंगल यहाँ पर भी कैनन का रखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि सिमुलेशन से
क्या रिजल्ट मिलते हैं, क्या रियलिटी में ये क्वेश्चन जो प्रिडिक्ट करती हैं रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट को, वो वैल्यूज़ क्या एग्जैक्ट एग्जिस्ट करते हैं जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उनके। तो चलिए इसको लॉन्च करके देखते हैं पहले। ये प्रोजेक्टाइल लॉन्च हुआ है और ये आप देख सकते हैं कि इसका पाथ पैराबोलिक है। और पैराबोलिक पाथ के लिए अब हम देखेंगे कि जहाँ पर ये लैंड हुआ इस प्लेस पर फाइनली, यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज कितना कवर किया। तो ये हमारे पास एक मीटर है जो कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करने के लिए होता है, जिसमें आप जिस कोऑर्डिनेट को सिलेक्ट करेंगे वो टाइम उस जगह पर, उस कोऑर्डिनेट पर टाइम बॉडी का कि किस टाइम पर रीच किया, कितना रेंज हुआ, कितना हाइट हुआ, ये वैल्यू यहाँ से पता चल सकता है। तो अगर हम इसको लॉन्च लैंड पॉइंट पर देखें तो रेंज का वैल्यू 19.86 मीटर है और हमने कैलकुलेट भी 19.88 मीटर किया था कैलकुलेशन, और टाइम ऑफ फ्लाइट एग्जैक्टली 2.65 मैच करता है। तो रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट तो मैच हो गया। तो आप देख सकते हैं कि फिजिक्स का ब्यूटी क्या है, जो इक्वेशंस हैं उन इक्वेशंस का प्रेडिक्शन एग्जैक्ट वही है जो हम एक्सपेरिमेंट रियलिटी में करते हैं। और अगर हम मैक्सिमम हाइट देखें तो 8.6 मीटर, हमने जो कैलकुलेट किया था वो 8.61 मीटर किया था। तो जो इक्वेशंस के प्रेडिक्शंस हैं वो एग्जैक्ट रियलिटी में होल्ड करते हैं, इसीलिए इन इक्वेशंस को हम स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों को स्टडी करते हैं प्रोजेक्टाइल के बारे में, कि प्रोजेक्टाइल को किस एंगल पे लॉन्च करें कि उसका रेंज मैक्सिमम अवेलेबल हो, रेंज मैक्सिमम हो। तो इसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है रेंज इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो आप देख सकते हैं कि रेंज डिपेंड करता है साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ एंगल पर। तो रेंज के मैक्सिमम होने की कंडीशन ये होगी कि अगर हम ये लिखें कि रेंज आर जो है वो आर मैक्स होगा, तो इसकी कंडीशन है कि साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। और साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू साइन की टेबल में मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो साइन 2 थीटा का वैल्यू, साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होना चाहिए। और वन वैल्यू साइन 90 डिग्री पर होता है। तो वी कैन राइट साइन 2 थीटा इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री, एंड बाय कंपैरिजन वी कैन राइट 2 थीटा as equal to 90 degree. So from here we can say that theta should be 45. So now let's check it with the simulation, okay? Different angles पर same projectile को 15 मीटर पर सेकंड स्पीड से लॉन्च करके देखेंगे और ये देखेंगे किस लॉन्च एंगल पर रेंज मैक्सिमम है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम 25 डिग्री से। 25 डिग्री पर जो रेंज है that is 17.57 मीटर, ओके? 25 डिग्री के बाद हम ले रहे हैं 35 डिग्री। 35 डिग्री पर अब जो रेंज है वो है 21 मीटर। तो रेंज पहले से इंक्रीज हुआ है। 45 डिग्री एंगल पर अब हम चेक करते हैं। 45 डिग्री एंगल पर रेंज है 22.94 मीटर, ओके? तो 45 से अगर हम प्रोजेक्शन एंगल, लॉन्च एंगल को बढ़ा दें, 55 डिग्री कर दिया अब हमने, अब आप देखेंगे कि रेंज पहले से रिड्यूस हो गया। सो मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पर अचीव होता है। आप फर्दर 60 डिग्री या 65 डिग्री या 70 डिग्री कोई भी एंगल लेंगे, रेंज पहले से कम होता जाएगा। सो यू कैन सी दैट इन दिस सिमुलेशन दैट मैक्सिमम रेंज अकर्स ओनली व्हेन द प्रोजेक्टाइल विद कांस्टेंट स्पीड व्हेन इट इज लॉन्च्ड एट डिफरेंट एंगल्स एट 45 डिग्री एंगल इट अटेन्स द मैक्सिमम रेंज, ओके? चलिए अब देखते हैं कि मैक्सिमम हाइट का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है, और यहाँ पर भी मैक्सिमम हाइट के लिए साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम होना जरूरी है। और साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है। साइन थीटा का 1, साइन स्क्वायर थीटा का भी 1 होगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा। सो साइन स्क्वायर थीटा व्हेन इट इज रिटन एज साइन 90, ओके, then by comparison we can say that theta should be 90, okay? Let's see the simulation. अब हम देखेंगे कि डिफरेंट एंगल्स पर लॉन्च करने पर अगर प्रोजेक्टाइल का स्पीड फिक्स रहता है हर एक एंगल पर, तो मैक्सिमम हाइट किस एंगल पर अटेन करता है प्रोजेक्टाइल। अब हम प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करेंगे डिफरेंट एंगल पर फिर से। तो 25 डिग्री पर लॉन्च करते हैं, मैक्सिमम हाइट अटेन करता है ये 2.05 मीटर। देन 40 डिग्री के केस में मैक्सिमम हाइट इट अटेन्स इज 4.74। एट 65 डिग्री एंगल
the maximum height it attains 9.42. So as you can see that as the angle increases, the maximum height also increases. So at 75-degree angle, the maximum height is 10.7, and at 90-degree, okay, the maximum height it attains is 11.47. So at different angles, keeping the speed fixed, the maximum height the projectile attains is the case when the angle of the launch should be 90 degree with the ground. Okay, चलिए अब एक इंटरेस्टिंग चीज और देखते हैं. प्रोजेक्टाइल को जब थीटा एंगल पर लॉन्च करते हैं और 90 माइनस थीटा एंगल पर लॉन्च करते हैं, मतलब अगर एक एंगल 15 डिग्री है, दूसरा 90 माइनस 15 दैट इज 75 डिग्री, तो रेंज सेम होता है. तो रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है. ये फॉर्मूला जब है जब हम प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पे लॉन्च करते हैं, तो वी कैन राइट व्हेन थीटा इक्वल्स टू थीटा. अब सेकंड केस लेते हैं जहां पर प्रोजेक्टाइल को हम 90 माइनस थीटा पे लॉन्च करते हैं. तो इस एक्सप्रेशन में हम साइन 2 90 माइनस थीटा लगाएंगे डिवाइडेड बाय जी, और हमने एंगल लिया है यहाँ पर थीटा 90 माइनस थीटा. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सो यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा बिकम्स साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, एंड साइन 180 माइनस 2 थीटा इज नथिंग बट साइन 2 theta. So this expression is same. Okay, so let's see simulation again. तो अब हम दो एंगल लेंगे, जो एक थीटा होगा, एक 90 माइनस थीटा होगा. तो पहले हम एक एंगल लेते हैं 25 डिग्री और देखते हैं कि रेंज कितना है. सो 25 डिग्री हैज़ द रेंज विच इज़ 17.57 मीटर. ओके, सो दिस इज द टारगेट पॉइंट, ओके, वेयर द पार्टिकल हैज़ लैंडेड. नाउ we will launch the projectile with the same speed but at angle 90 minus theta. So we launched at 25. So in this case 90 minus theta would be 90 minus 25, which would be around 65 degree. Okay, so if I launch the particle with the same speed at 65 degree, let's see, okay, where it would going to land. So it would land at the same spot. So the ranges are same in case when the angle is theta and 90 minus theta. But the difference is the trajectories are different. So at low value of launch angle, the maximum height of the projectile is less in comparison to the projectile launched at higher angle. So we can see that the paths are different, but the ranges are same, but the heights are different. Okay, and time of flight is also different. So here the time of flight is 1.39 second. Here the time of flight is 0.65 second. So time of flight differs. Height differs, angle differs, but the range is same. So from the simulation and the proofs, the mathematical proofs, we can say that at angle theta and at angle 90 minus theta, the ranges are exactly same. So let's talk about applications. Okay, it is DRDO's AT-AG, Advanced Stored Artillery Gun. So this is the horizontal line, okay, and this is the target to be destroyed. So in warfares, when we have a target, we just adjust the angle theta of the barrel of the ATAG to attain that range which is required to strike the target, and we just launch the projectile, the ammunition. Okay, it will going to strike the target and it would explode. So the target would be destroyed. So the launch angle theta is decided by those equations according to the range which is required to destroy the target. Let's take another warfare example where a B-10 bomber American plane dropping the bomb. So the person at rest would not see the bomb falling downward because the bomb is going to move in the forward direction, taking parabolic path, because the plane and the bomb both are having the forward velocity, say it is Vx. So when the bomb is released having some forward velocity, it would not going to fall vertically downward. It would take some forward motion, okay, that is the parabolic path, to strike the target. So at which location the bomb is to be released to strike the target, at what angle the bomb is to be released, these all calculations are done by computer programs written by programmers, and those programs assist the fighter pilot
while flying the plane, flying the aircraft to lock the target and strike the target. चलिए अब स्पोर्ट्स एप्लीकेशन देखते हैं। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर मेडल जो अचीव किया है, वहाँ पर जेवलिन को जब थ्रो किया जाता है तो एक सर्टेन एंगल पर किया जाता है जिससे कि रेंज मैक्सिमम अचीव किया जा सके। लेकिन यहाँ पर रेंज के लिए वो एक्सप्रेशन वैलिड नहीं है जो हमने अभी स्टडी किए हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्टाइल का जो लॉन्च पोजीशन है वो ग्राउंड नहीं है। हियर द प्रोजेक्टाइल इज नॉट लॉन्च्ड फ्रॉम ग्राउंड, सो हियर द एक्सप्रेशन वुड बी डिफरेंट। आर्चरी स्पोर्ट में जब कोई आर्चर एरो शूट करता है तो वो जो एरो है वो भी एक पैराबोलिक पाथ लेता हुआ टारगेट तक जाता है। यहां पर भी क्वेश्चंस of trajectory and motion they can be used to analyze and predict. In football also, when the footballer kicks the ball, it goes at certain trajectory, okay? And in shooting event also, किमेजी जब उन्होंने गोल्ड मेडल के लिए फायर किया, वो बुलेट जो जाती है वो भी एक पैराबोलिक पाथ लेती है। इसीलिए बैरल को थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में एक एंगल पे रखना होता है जो कि टारगेट पे स्ट्राइक करेगा। वहीं क्रिकेट में जो आपने बॉल ट्रेसिंग सिस्टम देखे हैं, यहाँ पर जो सिमुलेशन जिससे ये क्रिएट किया जाता है, ये भी प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं जो इन इक्वेशन पर बेस्ड हैं जो हम स्टडी कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही था लेक्चर सीरीज में। यहाँ पर प्रोजेक्टाइल पार्ट 2 फिनिश होता है। सो डू सब्सक्राइबर्स और जॉइन अस इन दिस ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ studying physics and making physics easy. So हम आने वाले वीडियोस में आपके लिए अगला नया टॉपिक लेके आएंगे, साथ में हम एक कॉम्पिटिटिव सीरीज भी शुरू करेंगे। So PhysicsbyAPS signing off. Enjoy and thank you. Happy physics. Bye bye.